Good morning, students. Today I am going to explain the multiplication of decimals. Number 1. Multiplication of decimal number by 100, 10 and 1000 etc. On multiplying a decimal by 10, the decimal point is shifted to the right by the one place. On multiplying a decimal by 100, the decimal point is shifted to the right by the two places and so on. Just as for example 67.24 into 10, यहाँ पे आप देखो 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये 0.1 डिजिट मतलब राइट शिफ्ट हो रहा है. 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा. 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट राइट शिफ्ट होगा एंड सो ऑन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाई होल नंबर्स. होल नंबर से आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? स्टेप 1, मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाई अ गिवन होल नंबर बाई इग्नोरिंग द डेसिमल. एंड स्टेप 2, mark the decimal point in the product to have as many places of the decimal are there in that the given decimal. जैसे as for example 5.43 into 15. The first we will multiply 543 by 15. Then we will put the decimal from the right side after 2 points, and so on. Number 3, multiplication of decimal number by decimal. अगर किसी भी decimal number को decimal number से ही multiply करना है तो what will we do? Multiply the two decimal by ignoring the decimal point just like whole numbers. Number 2, mark the decimal point in the product in such a way that the number of decimal places in the product is equal to the sum of the decimal places in the given decimal. जैसे as for example जैसे 1.001 into 0.001 इसको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वी हैव टू इग्नोर द डेसिमल and this number will be 1001 and this number will be 1, है ना, and its product will be 1001 and we will put the decimal after 6 digit from the right. 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 डिजिट था तो 2 0 यहाँ पे पुट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, है ना. सपोज कीजिए यहाँ 1.2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वी विल इग्नोर द डेसिमल एंड वी विल मल्टीप्लाई 12 by 11, है ना, एंड द प्रोडक्ट विल बी 132. आफ्टर दैट वी विल पुट द डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड आफ्टर 2 points 1.32. and this is the end of today's class. You have to do the following sums related to these topics yourself in your school copy.